Good afternoon, friends. We have assembled to participate in an important discussion. Jammu and Kashmir, the road ahead. This is the 10th discussion that we are having after 5th of August. 4, 5 of them were roundtable discussion, but now, look, because of the situation of the COVID, we are having webinars. The last one was on 21st of November, and a couple of friends were very enthusiastic. They suggested that we should meet once a month and exchange notes on the subject. And that is why we are meeting so soon. May I? We have discussed issues which have arisen after 5th of August several times. Since we met last, one important development has taken place, and that is the DDC elections in Jammu and Kashmir. Let us examine its relevance, impact, and other important things, and see where does the road go ahead from here. May I request Mr. Tarigami, he doesn't need an introduction, a political leader of repute representing Communist Party Marxist, to initiate the discussion. And he will be followed by Professor G.M. Bhatt. Tarigami Saab in 4-5 minutes, please. सबसे पहले we are thankful that you have again taken the initiative and provided this opportunity to all of us to have a discussion on the recently held DDC elections and the road ahead. मैं इतना ही कहूँगा, हम सब कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं, कई फोरम्स में भी, और मेरे ख्याल में एक कंसेंसस रहा है हमारे बीच में क्या इस सूरत हाल में बदलाव लाने के लिए सियासी सतह पर पहल होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गलतियों का दुरुस्त करने के लिए, लोगों के ख्वाहिशात, लोगों के जज्बात को कदर करने के लिए, और फिर सबसे बढ़कर डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये लंबा सफर शायद होगा ऐसा करने के लिए, लेकिन वो सब लोग जो ताल्लुक रखते हैं जम्मू कश्मीर से या जिनका कंसर्न रहा है, वो जानते हैं कि किस कदर मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा इस खित्ते के लोगों को। गमूत था सियासी सतह पर, और वर्चुअली लग रहा था जैसे कि वो जो एक शॉक में ओवरटेक किया था पूरे जम्मू कश्मीर को, लगभग लग रहा था कि इससे निकलना काफी दुश्वार होगा। सियासी सरगर्मी न होने के बराबर थी, इस वजह से भी कि कायदोबंद का सिलसिला जारी था मिलिशियों का, और यहाँ तक कि जो कम्युनिकेशन की लाइनें भी अभी तक कमजोर ही हैं, और इससे पहले और ज्यादा कमजोर रही। कोई हौसला नहीं था, कोई हौसला नहीं मिला नॉर्मल एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि रुकावटें ही सामने आई या जिनका तजुर्बा मिला हमारे आवाम को। ये जरूर है कि इमरान पार्टी को वो सब सहूलियात मैसर थी, उन्हें अपॉर्चुनिटीज थी गाली गलौज का सिलसिला जारी रखने के लिए, गलत किस्म की बातें, अफवाहें, इल्जामात, वो सिलसिला जारी रखने का मौका दिया गया उन्हें। लेकिन जवाबी
जवाब किससे चाहे, जवाब कौन दे, वो कुछ अता पता नहीं था। बहरहाल आपको मालूम है कि वो लोग जो आज तक अहम सियासी हैसियत हासिल कर चुके हैं, वो पार्टियां जो इक़्तिदार में भी रही हैं, उन पर भी बंदिशें थी। नतीजा ये है कि पॉलिटिकल सरगर्मियां वर्चुअली बंद हो चुकी हैं। बहरहाल एक आगाज हुआ 5 अगस्त 2002 के बाद, जब उन पॉलिटिकल पार्टीज ने मीटिंग की, एक ऐलाननामा पहले ही इजरा हो उसका इयादा किया और आगे एक साथ बढ़ने का फैसला किया। और अभी उनका एक डिप्यूटेशन लीडरशिप का जम्मू आया था, ताकि जम्मू के लोगों के साथ भी रिश्ता जोड़ा जाए, सलाह मशवरा किया जाए, उनके ख्वाहिशात, उनका मशवरा, उनके गिले हुए उनको जाना जा सके। तो यकायक आनन फानन सरकार ने फैसला किया डीडीसी चुनाव का। डीडीसी चुनाव का शेड्यूल तय हुआ, ऐलान हुआ, तो वापस आना पड़ा सभी लीडरशिप को अपना सफर अधूरा छोड़कर। और ये कह दीजिए, ये मुमकिन होगा कहना कि तैयारियों का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि ऐसा अमल चाहिए तो ये था कि मुशावरत हो, बहस हो, इसमें कुछ चर्चा हो, मशवरा मिले, तजावीज मिले, उन पर गौर खोज हो, जो कबूल होगा उसे आगे लिया जाएगा। ऐसा मौका दिया नहीं गया। और हमारे इस अलायंस ने फैसला लिया कि ये डेमोक्रेटिक स्पेस को का पूरा फायदा लिया जाना चाहिए अवाम के मुफादात की खातिर। और कुछ भी शिकवे हों, कुछ भी मसाइल हों, कुछ भी रुकावटें हों, बंदिशें हों, उन बंदिशों को, रुकावटों का मुकाबला करते हुए हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होना चाहिए। बहरहाल ये शुरुआत हुई पॉलिटिकल में। मेरे समझ के मुताबिक तो जमूत था, उसे तोड़ने में, वो स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस जो रुक चुका था, उसे आइसर नाव धीमे ढंग से ही सही शुरू करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली हमारे अवाम को। और हुआ क्या बाद में? बावजूद है कि कई शिकायतें, बावजूद है कि अपॉर्चुनिटीज जिस ढंग से मिलनी चाहिए हर स्टेक होल्डर को कैंपेनिंग के लोगों के साथ राबिता जोड़ने में, उसमें कमियां रही। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी मेरी राय में अवाम ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और हालात नासाजगार होने के बावजूद भी अवाम ने शिरकत की। और पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक्सपेक्टेशंस थे उनसे भी बढ़कर हमें भी ये यकीन नहीं था। उन इलाकों में जो सिक्योरिटी लिहाज से भी सेंसिटिव रहे हैं, काफी परेशानियां रही हैं उन इलाकों में, बेशतर इलाकों में, लेकिन तब भी दूर दराज इलाकों में बंदिशों के बावजूद, सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद और डिसल्यूशनमेंट के नाउमेदी और मायूसी के माहौल को देखते हुए भी लोगों ने शिरकत की। मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारे अवाम। कौन कहता है कि वो अपने आप को संभालने की सलाहियत नहीं रखते? एक बार फिर हमारे अवाम ने, हमारे खित्ते के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम ने दूर दराज इलाकों में भी ये साबित किया कि वो नब्ज़ शनास हैं, जानते हैं कि जब भी कोई लिमिटेड अपॉर्चुनिटी ही सही मिले, कम वक्त में भी मौका भी ना मिले पूरा, तब भी हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सीज कर लें ऐसे अपॉर्चुनिटीज को और अवामी मुफाद को आगे बढ़ाने की तगदो जारी रखें। ऐसा ही हुआ। रिजल्ट सामने है हमारे कश्मीर में, जम्मू में। हता कि कुछ लोग अब सरकारी हुक्मरान पार्टी बीजेपी की तरफ से, हता कि उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये है कि
स्टार अलायंस के साथ शामिल पॉलिटिकल पार्टीज, जिनके साथ उनके ताल्लुकात भी रहे हैं गाहे बेगाहे, जिनके साथ उन्होंने सरकारें भी संभाली हैं, क्यों ही उन्होंने फैसला लिया कि इंतखाबात में हिस्सा लेने का, उन्हें गैंग का नाम दिया गया। शायद उनकी डिक्शनरी में ऐसा ही है, जो भी जमहूरी अमल में उनके मुखालिफत में खड़े हो जाए वो गैंग कहलाते हैं। मालूम नहीं किस कदर वो जमहूरियत के हक में जमहूरी कदरों की तजलील करना चाहते हैं, वो हमने देखा। लेकिन फिर भी बहरहाल उनका भी ये हक बनता है कि वो भी अपना मौक़िफ़ रख लें, लेकिन मौक़िफ़ के नाम पर गाली गलौज और ऐसे इल्जामात कि जवाब देने का भी मौका नहीं, ऐसे इल्जामात जिनकी बुनियाद नहीं कही, ये बदकिस्मती से हमें इस चर्चे में, इस प्रोसेस में देखना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर अवाम ने अपनी सूझबूझ का फैसला दिया और नतीजा हमारे सामने है। ये दुरुस्त है कि हमें जहां गिले हैं, शिकवे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, वहां मैं ये भी कहूंगा कि कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। बाय एंड लार्ज ये प्रोसेस, पीछे प्रोसेस पीसफुली कंक्लूड भी हुआ और आज हमारे सामने मुख्तलिफ इलाकों में चुने हुए नुमाइंदे हैं। इस पर बहस हो सकती है कि क्या ये चुनाव, असेंबली के चुनाव को यकतरफा रखकर मुनासिब था, या जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में कहा था कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा और असेंबली को भी वहां रेस्टोर किया जाएगा, असेंबली चुनाव होंगे। ऐसा हुआ नहीं। यूनियन टेरिटरीज में भी असेंबलियां होती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर है, कहा पार्लियामेंट के जरिए चुनी हुई सरकार है, होम डिपार्टमेंट है और फिर होम डिपार्टमेंट की वसातत से सरकार के मामलात चलाए जाते हैं और फिर हमें ये तोहफा मिला डीडीसी का। इस बहस में जाना नहीं, बाद में कभी मौका मिलेगा क्या कुछ और किया जा सकता था, इस प्रोसेस को और ज्यादा मुवस्सिर बनाने के लिए और कदम चाहिए थे या नहीं, भलाई भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा, जम्मू तोड़ने में ये जो स्टैग्नेशन का माहौल था, पॉलिटिकल वैक्यूम था, जो इस वक्त डिसलूजनमेंट था, डिमोरलाइजेशन थी, काफी हौसला शिकन हालात थे, उन्हें कम करने का एक मौका मिला जिसका फायदा उठाया हमारे अवाम ने। अब ये भी कोशिश है कि प्लीज कंक्लूड। अब ये भी कोशिश है इसे एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, कश्मीर के अवाम ने अपना कंसर्न शो किया, जम्मू के अवाम ने दूर दराज इलाकों में, ये दुरुस्त है, उसकी कदर की जानी चाहिए। ये मेरा मशवरा होगा अहले इक्तदार से। जो भी आपने कहा रोड हेड क्या हो सकता है, रोड बंद किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रास्ते, छोटा सा रास्ता खोला इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। आगे इसको बढ़ाना है और इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी अहले इक्तदार को है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। मैं आज भी उनको ये जलाना चाहता हूँ, 2019 अगस्त हुआ, तारीखी गलती है वो, तारीखी गलती। और सबसे बढ़कर तारीखी गलती में ये भी है कि हमें आज तक असेंबली से और स्टेटहुड से भी दूर रखा गया। इस पर कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और साथ ही साथ ये जो मैंडेट मिला, इस मैंडेट की कदर करनी चाहिए। और अभी जो ये तासुर है, खबरें हैं चेयरमैनशिप के बनाने के बारे में, कभी उधर से इधर लाने की कोशिश हो रही है, ये सिलसिला ठीक नहीं होगा, इससे ये प्रोसेस मुतासिर होगा। और मेरा मशवरा होगा, इस प्रोसेस की सेहत के लिए जरूरी है
कि कदर की जाए आवाम के इस मैंडेट की और DDCs को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए फौरी कदम, और वो भी फेयर होने चाहिए। हर मुंतखब नुमाइंदे को, सियासी पार्टियों को मौका मिलना चाहिए कि वो इस प्रोसेस में अगले कदम में भी जिम्मेदारी से अपना रोल निभाएं। आवाम इंतजार कर रहे हैं, आवाम दुखी बहुत हैं। अगर कोई भी कदम राहत का उठाए सरकार, वो उसे अप्रिशिएट करने के मुताबिक ही चल रहे हैं। शायद राहत देने के लिए बड़ा दिल चाहिए और एक बड़ा जिगर चाहिए, सर उठाकर जीने का मौका मिले। मेरे ख्याल में ये जम्मू कश्मीर की राय है, आवाम की, इस मैंडेट की राय है, और साथ ही साथ मुल्क की सलामती के लिए भी जरूरी होगा। Thank you. Thank you. May I now request Professor Bhatt to offer his comments in about 4-5 minutes, please. Professor Bhatt. He will be followed by Mr. Kuldeep Khoda and then Hussain, Arjuman Hussain. Kuldeep Khoda, sir. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ये तारिगामी साहब को मैं फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने जो बातें कही हैं वो अपनी जगह पे, गवर्नमेंट का भी अपना एक नजरिया है इन इलेक्शंस पे, वो अपनी जगह पे है। हमें देखना चाहिए ओवरऑल जो सिचुएशन इमर्ज हुई है इन इलेक्शंस में, DDC के इलेक्शंस जो हुए पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। एक इतिहास भी बना जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, शायद पहली बार इतना बड़ा इतिहास बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आवाम का रुझान भी देखना चाहिए हमें। 50 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में, दोनों श्रीनगर से भी और जम्मू से भी। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें देखना चाहिए कि उनके कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए वो जीते हैं। वो एक पब्लिक का एक रुझान है तरह से। पॉलिटिकली मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं देखता हूँ, सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर में देखता हूँ कि इन चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्या लोग वाकई उनको चाहते हैं? क्या वाकई गवर्नमेंट को लोग चाहते हैं? 50 इंडिपेंडेंट आने, अगर वो ये डिसाइड करेंगे कि वो अलग से एक पार्टी बनाएंगे, थर्ड मेजॉरिटी पार्टी होगी जम्मू कश्मीर में, कि एक नया सा लीडरशिप शायद उभर रहा है, तो हमें देखना चाहिए, उसको हमें बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। हम सब डिपार्टमेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब डेवलपमेंट कितना हो रहा है इसमें, इस वक्त भी या पहले कितना हुआ है, सब जानते हैं। हमारा पर्पस है सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पीस प्रिवेल होना चाहिए। आम नागरिक जो है वो अमन चाहता है, वो जिंदगी सुख से गुजारना चाहता है, रोजी रोटी उसको मिले, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब ये जो आइस ब्रेक हुआ है, जिसका भी इनिशिएटिव है, पॉलिटिकल पार्टीज का है या गवर्नमेंट का है, क्रेडिट लेने की बात नहीं है। एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, एक स्टेप आगे चले हम, जैसे तारिक अमीर साहब ने भी एग्री किया उसको। जैसे भी ग्रीवेंसेस वो अपनी जगह, जैसे भी अपनी उनकी राय है या पॉलिटिकल पार्टीज की राय है, गवर्नमेंट का क्या नजरिया होगा इन चीज़ों पे, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने 2-3 बातें कही उनको माइंड में रखना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी और गवर्नमेंट को भी। आवाम सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको रैंसम पे हमें नहीं रखना चाहिए। उनके जो हुकूक है उसकी तरफ हमें काम करना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। पिछले 2 साल से हमारी जनरेशन तबाह हो रही है, एक वजह से, दूसरी वजह से कोविड आ गया। पूरे इंडिया में बच्चे स्कूल में चले गए। 2019 से तो हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, पूरी एक जनरेशन तबाह हो रही है। उसकी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज को भी, गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। जब ये जनरेशन आगे चलेगी तभी हमारी स्टेट का कहीं तरक्की का कुछ होगा। सिर्फ पॉलिटिक्स, बराए पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होनी चाहिए। मैं यही कहूँगा, इसके आगे कुछ कहना ठीक नहीं लगेगा इस स्टेज पे, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका हमें यूज, ये जो है ना, गंवाना नहीं चाहिए।
पब्लिक ने हमेशा पार्टिसिपेट किया है और शायद पहली बार टर्माइल के बाद जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर प्रोविंस में बहुत तादाद में इन्होंने लोगों ने शिरकत की है इसमें। इतनी 40% भी 50% भी पोलिंग हुई है, जो पहली बार हुआ पिछले 3 सालों में। एक अपॉर्चुनिटी है, उसको हमें अवेल करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अवेल करना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती। पॉलिटिकल पार्टी चाहिए वो गठजोड़ में हों, इंडिविजुअल हों, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कदम बढ़ाए, कुछ इस जम्मू एंड कश्मीर के आम लोगों के लिए कुछ करें। यही हमें देखना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर जो है, फ्यूचर हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, पर्टिकुलरली जो हमारे यूथ हैं जो कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसके बाद जो नौजवान इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में बेकार बैठे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी का कुछ होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उस पर हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें कितना उसमें सूट करता है, क्या नहीं करता। क्योंकि हमारी उम्रें उस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, तो हमें फ्यूचर जनरेशन को हैंड ओवर करना चाहिए। लेकिन उनको तैयार करें तो तभी करेंगे ना। दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी, दैट शुड बी द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। थैंक यू सर। Thank you very much, Professor Bhatt. Mr. Kuldeep Khoda. Kuldeep ji, हाँ जी, आवाज आ रही है? please. Can you hear me? And let's deal with this situation about DD's election and post. I don't know whether you can see me because there is some problem with my video. Is Well, it- we can hear you. Okay. We can hear you, sir. Okay, thank you very much. I think I'll have to go without video because there's some problem with the video, this setting problem on my. That'll be fine. So you carry on with your voice. Thank you. Mr. Bhatt and Mr. Taregami ने बात कही है, उन्होंने डिटेल में बता दिया. The DDC elections have been conducted and as already pointed out, they have happened without any incident and people participated wholeheartedly. But let me point out, because I want to be frank about this situation, the elections in the past and this present election also has been more or less confined to the local issues and also local politics, I should say. It is not a referendum for anything as it is basically the people are elected for various places, whether it is assembly or for district development council. The people want to vote for candidates of their choice for development and many other issues. So let's not try to mistake it in a way that it is probably part of some sort of referendum on any issue, whether 370 or any other emotional thing, which generally many times many politicians try to refer to. But the problem with regard to Kashmir, for past 70 years and more specifically after 1990, it has continued to remain a big problem. Terrorism is one part of it, but along with terrorism, there are several other issues, whether they are development issues, whether they are the transparency issues, whether they are governance issues, the development issues, the education, the integration of youth with the rest of the country, and radicalization, and more fundamentally, the alienation. Now, the terrorism, the forces have been dealing with very well as far as internal security is concerned. As far as dealing with Pakistan is concerned, I have mentioned in the past also many times that we don't have any consistent policy vis-a-vis Pakistan as far as Kashmir is concerned, because Pakistan has continued with its policy of terror since 1990 without any let-up. There have been instances where the terrorism levels have increased or decreased, but we cannot say as of today also that we have been able to control Pakistan as far as their support to terror activities is concerned, or able to make big dent or make it impossible for Pakistan to continue with the terror activities. The surgical strike of 2016 or the aerial bombings of Balakot
in 2019. Yes, they created some temporary impact, but we should not mistake it for something like that we have been able to deal with Pakistan. But beyond that, the governance issues, which are very important, the developmental issues, which are again important, which can result in youth getting addressed. J&K has few of the sectors where a lot of employment can be generated, whether it is tourism, horticulture, power sector, the industries also, the handicrafts. We are still not making any big stride as far as those things are concerned. The Prime Minister has today a health program that of course is always welcome, that sort of initiative. But we have to go far beyond that. And the alienation is something which continues to be a big bother, which needs to be addressed by addressing the core issues. Let's at least try and see how far we can some sort of vested interest in the youth of J&K to be part of India. Taking them on to make them emotionally attached or integrated with India is a very, very far-fetched thing. That is a secondary thing. But primary is that can we develop some sort of vested interest in the form of that they actually feel that yes, we are better off being a part of a great country like India. And whether it is employment, jobs, education, economic development, we are more comfortable here than being separate or being part of Pakistan. We have yet to reach that stage. I think we should try and make some efforts to reach a situation where these issues can be addressed and we can take some step forward. Beyond that, I think I don't know whether it is by design or by just error or by false sense of addressing the issues, like talking about the Gupkar as a gang. No, we have to address this. We have to understand the sensitivities of the entire issue also. The alliance formed to fight elections. By referring to it as gang, we are unnecessarily trying to alienate the issues and alienate the people, which develops a counter reaction. They have been the main people in this alliance have been chief ministers. They have been the union ministers, union minister of state also, and we have to be sensitive to these issues. We have to, if we want, when we talk about alienation, we have to understand whether what we talk or what we say or how we address, whether it is going to increase the alienation or further increase the alienation. So I think Kashmir has remained an issue because of various follies being committed at various levels with regularity and with the sense that probably it's going to appease some people there may be some political reason for that I don't know, but as far as getting the youth back into the mainstream is concerned, it is really not helpful. Thank you. Sorry. Kashmir, we have to, I would like to focus once again that sensitivity should be kept in mind. The governance issue should be kept in mind. The development issue should be kept in mind. We should have a coherent national policy and policy which can be consistent for a period of time without interruption. There can be minor changes sometimes, but it should not be where basically we react to the situations rather than try to develop a response which is methodical, rather than react to what Pakistan does as Kashmir is concerned.
The DDC elections are welcome, and I'm sure that this will be followed at some point of time with assembly elections also. Getting J&K people in the mainstream elections is one of the process, but we need to carry on and address the Kashmir problem on all dimensions rather than addressing it on just one or two issues only. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Qazi Ashraf, Dr. Qazi Ashraf from Srinagar. Dr. Saab, are you there? Dr. Qazi Ashraf? I just saw him. Dr. Qazi Ashraf? Dr. Saab, he's just connecting to audio. He's there. He was. Dr. Qazi Ashraf? Dr. Ashraf? Probably he can't hear me. Sir, move on to next one, please. Huh? Dr. Ashraf, please offer your comments. There's something wrong with his instrument, it appears. Although I can see him. He might have muted his speaker. Well, there's something which. Ashwani ji, would you like to offer your comments now? We'll get Dr. Ashraf afterwards. Mr. Ashwani Kumar. Thank you very much, so kind of you all. For me, it is the third opportunity. First of all, I congratulate on the occasion of elections to the DDC having conducted by the administration very well and supported by the people and the political parties and media. It is a historic occasion for all of us. And moreover, since it's a very successful turnover as well, and then it happened without bullets and boycotts for the first time after 1987, I believe it is a major achievement. In my opinion, 60 plus voting turnout in Jammu region and 30% plus voting turnout in Kashmir Valley is significant in all respects. Yes, I agree that the doors have been opened. The doors have been opened for a big march ahead. I don't think this is the time for us to go into the details. So far as complaints of the last several years is concerned, the fact of the matter is that whatever has happened over the last 2 years has become a history. And it has hugely impacted the socio-political scenario of the Jammu and Kashmir state. Having said so, I would like to reiterate that no government has been seen taking its bills, taking its laws back. No government has been seen doing that. Neither will this government do that. If it has not been done in the past, I'm sure it is not going to happen in the present. I cannot talk of future, but so far as the present is concerned, what has been constructed over the last 2 years, politically speaking, constitutionally speaking, legally speaking, holds water up to the time some revolution comes, say after some decades away from this point. Then the very important point is the issue of sensitivity. Yes,
I believe sensitivity is a very important issue so far as the political narrative is concerned. Even while going on repeating the rhetoric, we take care of sensitivities, but sensitivities cannot be applied as secularism has been applied selectively. It cannot be a selective sensitivity. It cannot be a selective sensitivity. Only one side will have to follow the rules of the game, and the other side will do whatever it would like. A person who has been chief minister 3 times and a minister in the union cabinet, does it uh, perform well and does it augur well? He speaks that it would be better to have China and Chinese rule in Jammu and Kashmir state. Is not that a sensitive issue of sensitivity? Then the chief minister of the state, former chief minister of the state, who is at this time president of a party, saying that there will be bloodshed if Article 370 will be abolished. There will be no hand that could carry the national flag. Then I will not have national flag in my hand up to the time the state flag is restored. These are also very sensitive issues. Once you go to those insensitivities, then one should be ready to face in the same coin. It is very important in politics that the narrative should be always considered as reciprocal. If I use a wrong narrative, the reciprocity will have to be faced by me. Then I would like to emphasize that having done and said whatever has happened, the most important thing is what ahead. In my opinion, the most important thing now ahead for all of us is the issue of delimitation. Delimitation Commission will come in and its work will start. We are all in agreement that Jammu region has been a victim of discrimination and bias over the last 7 decades. So issues, those are unsettled, will have to be settled politically. So far as the Legislative Assembly is concerned, this Delimitation Commission will have to take that into account. Then it will have also to take into account those sections of the community who have not been taken seriously or who have been the victim of bias, political discrimination. For example, Kashmiri Pandit community, for example, the West Pakistan refugees living in the state, and Valmiki Samaj, etc. They will have also to be given an opportunity to be represented in the Legislative Assembly by the Delimitation Commission. So this is my opinion, that the Delimitation Commission and the Government of India, Ministry of Home Affairs, will have to seriously think to recommend measures to the President of India and the Government of India for getting all these sections of community who have been victimized by the circumstances to get represented in the future assembly. That, I believe, is the path ahead for all of us. And in my opinion, the Delimitation Commission will start working in January, and we all will have to have our agenda ready to put before them. And this is the time to end discrimination with regions, discrimination with people, and also bias against certain sections of the society. We, as a homogeneous society of Jammu and Kashmir state, would like and love that all sections are given what they deserve and what they desire. Thank you very much. Over. Thank you very much, Ashwini ji. Dr. Ashraf, are you ready? Dr. Ashraf? I can see him, but I can't hear his voice.
Dr. Ashraf, I don't know. There is something. Dr. Ashraf, Mr. Arrangement Hussain, are you there? Mr. Yeah, Hussain. I'm Yeah, here. yeah, Yeah, I'm please. here. Yeah, please offer your comments. Yeah, thank you very much, Opisha ji, for inviting me to this Mr. Hussain is conversation. an eminent journalist from Srinagar and an Well, not a activist also. journalist per se, I would say an entrepreneur. And one of my entrepreneurial activities happens to be a publication which is focusing on business on and economy of Jammu and Kashmir. Okay, so today's topic, the road ahead for Jammu and Kashmir, very interesting topic. As someone who hasn't ever been into politics, as someone who has come back to Jammu and Kashmir after spending some 10 years outside the country and trying to, reconnect with my roots in Jammu and Kashmir, I would say that I'm wondering and asking myself, where is the road ahead and where is the road, and if a road exists at all. I would say that, we are standing at a very crucial time of history in Jammu and Kashmir today. And if history is anything to go by, then there are definitely lessons. And much would depend on how do we learn those lessons of history and how cautiously we take the next steps. Well, in terms of the DDC elections, one reassuring thing about it, despite all the issues and the challenges earlier very eloquently mentioned by Tarigami Sahab, is one thing that these elections were held in an atmosphere of peace, and a large population of Jammu and Kashmir appreciated the imperative of engagement with this electoral process. And as a consequence, some degree of democratic space was recreated and reclaimed in Jammu and Kashmir after a very difficult time. Now the question is, after DDC elections, what next? Well, as an ordinary citizen of Jammu and Kashmir, I would say that the happenings of August 5, 2019 have been a tectonic shift, not only for Jammu and Kashmir, but also for the rest of the country. There has been have been political changes, significant political changes, which have manifested in deep impact on the economic, social, and psychological fabric of the people of Jammu and Kashmir. And we need to consider these changes, the impact of these changes on the psyche of the people of Jammu and Kashmir before considering the next steps. And what's important in that? The important thing for the next step would be accommodation, political accommodation. It would be really not prudent to take up a path which would be like my way or the highway path, that there is only one path and you have to agree with this path alone, and then the rest of all the opinions, all the diverse thoughts, all the diverse political formations don't matter. That won't be sensible, that won't be prudent at all. Second would be mutual respect. It's important that when we talk about accommodation, we also talk about, creating a space which is mutually respectful, all the diverse political formation, all the diverse ethnic groups, and all the, different identities of Jammu and Kashmir. That's important. And why is that important? See, the avowed objective of the current dispensation now is one, as Ashwani ji just now mentioned, is to go for another radical step of delimitation of assemblies in Jammu and Kashmir, and then try to transform Jammu and Kashmir economically and socially through massive investments, through development. I have never been able to understand the meaning of this term when we look at the idea of sustainable development in today's world. So looking at that,
if that is the way ahead, then a lot of questions are raised. One question is about governance. If we are engaging or embarking on a course wherein only one kind of opinions or one kind of political expressions would be allowed in Jammu and Kashmir, the point is, how would it help in improving the quality of governance in Jammu and Kashmir? How would it help in encouraging investment, in creating jobs, and improving the quality of life of the common citizens of Jammu and Kashmir? I think all of us would agree that the basic, the foundation of good governance, of accountability in any democratic system is when you allow competitive politics, when you allow diverse views and groups of people expressing themselves and contributing in a political system. But now, if you are now embarking on a political system wherein only one kind of opinion would prevail, one kind of political system would prevail, where is the competition? Where would be the political competition? And how would it help in creating greater accountability? How would it help in improving the quality of governance in Jammu and Kashmir? How would it address in addressing and containing corruption in Jammu and Kashmir? The second point is economic. If you engage, embark on this path of my way or the highway thing, the point is, how would the private sector come in and invest in Jammu and Kashmir? The fundamental thing for investment in Jammu and Kashmir, whether local or from outside, is political stability. So if there is no political stability, how do we expect private investors to come and invest in Jammu and Kashmir? And how would jobs be created? Currently, there has been a lot of emphasis on the public sector in Jammu and Kashmir in terms of job creation. 400,000 jobs in the public sector, where the locals of Jammu and Kashmir were the ones who would get those jobs. Now, since there have been changes in the job laws, so naturally, certain quantum of jobs for the local population in Jammu and Kashmir would not be there. And in contrast, our population is increasing. Jammu and Kashmir in 2011 had a total population of 13 million. And our decadal growth of population is about 27%. So by 2021, we would be already 1 crore 45 lakhs or probably 1 crore 50 lakh population. And then if we consider the same decadal population growth, that would mean in 2031, Jammu and Kashmir's population would be close to 2 crore. Now the question is, where do we find and create jobs for the young people? And our young population, because the older population, the quantum or the proportion of the older population. Please conclude. Please conclude. I'm sorry, I just tried to go into a lot more details. I would just briefly conclude. So I talked about governance, the quality of governance. I talked about accountability in the governance system. I talked about economic development and creation of the jobs. And finally, I would talk about creating a congenial atmosphere for all diverse groups of people to live in peace and harmony in Jammu and Kashmir. That is the point. And fundamental to that is an honorable return of Kashmiri Pandits to Kashmir. That is the point. That is the point. Do these conditions, would these kind of political changes, whatever is happening, ultimately facilitate and help in an honorable return of Kashmiri Pandits to Kashmir? I think these are some of the questions that we really need to dispassionately address and discuss, and bear in mind that the course ahead in Jammu and Kashmir is not easy. The population is hurt. The population is still yet to come from the tectonic shock that has been caused on August 5, 2019. They need accommodation, they need expression, they need respect, and they need a say in the political system. Thank you very much. Thank you very much. Khajuria Saab. Your नमस्कार comments, सबको please. जी खजूरिया साहब. जी जी हाँ जी, फरमाएं. हेलो हाँ जी. हेलो नमस्कार
मैं जो आज मुद्दा रखा है डीडीसी इलेक्शन और रोड हेड, पहले तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन कोई भी हो या जब भी जमहूरी कोई रास्ता हो तो उसे हम appreciate और अप्रिशिएट करने के जरूरत भी है, लेकिन इसमें जो तरीके अपनाए गए, जो समय लिया गया, वो कोई ज्यादा फायदे नहीं पहुंचा पाया। एक तो जो साथी बोले हैं उन्होंने एक बात इसको टच नहीं किया कि इस डीडीसी की इलेक्शन में एक बहुत इम्पैक्ट पड़ा या एक बहुत बड़ा हमें सामने एक डिवीजन आई कि 4 डिस्ट्रिक्ट क्या चाहते हैं और 16 डिस्ट्रिक्ट क्या चाहते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट क्यों ऐसा चाहते हैं और 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसा क्यों चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसे समझना चाहिए और आगे के लिए ये रोड हेड में भी काम आएगा। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो रोड हेड के लिए हम सोच ही नहीं सकते। हम यूनाइट करने के बजाय हमने लोगों के बीच और डिवीजन डाल दी और इतना ज्यादा गलत प्रोपेगेंडा हुआ इस हालत में कि इन्होंने साबित कर दिया कि 4 डिस्ट्रिक्ट में कौन लोग रहते हैं और 16 डिस्ट्रिक्टों में कौन लोग रहते हैं। ये इस डीडीसी की इलेक्शन का अगर ये हिसाब है तो अगर वेलकम कर रहे हैं ये असेंबली इलेक्शन का, तो ये इससे बुरा होगा, इससे भी के नतीजे और भी ज्यादा बुरे दिखाई दे रहे हैं। उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है और ना ही इस बात का हमें लेना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो हाँ बोलिए खजूरिया साहब। एक मिनट गुम हो गया था। तो इस हिसाब से मैं समझता हूं कि जो डीडीसी की इलेक्शन से हमें सबको सीखना चाहिए और जो एक यूनिटी होनी चाहिए थी। अगर कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई स्टैंड लिया इकट्ठे होकर तो उसे जम्मू के लोगों में भी यूनिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उसे डिसयूनिटी के लिए किया गया और उनको ऐसा डराया गया कि 4 डिस्ट्रिक्ट भी अगर नहीं बचे हमारे हाथ में तो हम मर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा गहरा बुरा असर छोड़ रही है। दूसरा जो रोड हेड है, अगर रोड हेड के लिए चलना है तो इससे जब विकास के लिए सोचना है, ये हमें सोचना पड़ेगा कि 17 साल विकास क्यों नहीं हुआ। 17 साल विकास क्या पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से नहीं हुआ, किसी वंशवाद की वजह से न हुआ या किसी इंडिविजुअल की वजह से ना हुआ, जब हमारा विकास जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस की वजह से ना हुआ। हमने 48 की जंग देखी, हमने 65 की जंग देखी, 62 की देखी, हमने 71 की देखी, हमने 93 की देखी, फिर हम विकास कहां कर पाएंगे? विकास कैसे हो सकेगा जब तक हम पीस का रास्ता नहीं लेते, पॉलिटिक्स ऑफ पीस नहीं लेते। हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम इशू को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और जहां कहा भी जा रहा है कि मैनेजमेंट और मैनेज करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए, मैं कहता हूं इसे रिजॉल्व करना चाहिए। अगर जब तक 70 साल का 75 साल का इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो हमारा ना विकास होगा ना हमें पीस मिलेगा। बॉर्डर पर हमारे पर रोज गोली चलती है, इसका नाम कोई नहीं लेता और बंदरगाह बॉम्बे की और कराची की काम करती है, वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर वालों को गोला चलता है। ये विकास की अड़चन जो है जहां फंसी हुई है। अगर रेजुलेशन पड़े हुए हैं, अगर शिमला एग्रीमेंट है, अगर 94 का प्रस्ताव है कि हमारा पार्ट आधा किसी के पास है, तो तब तक जम्मू कश्मीर में रोड हेड बगैर पीस के कोई नहीं ढूंढा जा सकता। पॉलिटिक्स ऑफ पीस एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कम्युनिटीज, बिटवीन रेशंस, बिटवीन नेशंस, जब तक ये नहीं अपनाएंगे हम रोड हेड के लिए एक मनसूई आर्टिफिशियल मेथड ढूंढेंगे। अच्छा जी एक ये कर दो, अब बीडीसी की इलेक्शन हुई कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, पंचायतों की इलेक्शन हुई कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, अब डीडीसी की इलेक्शन हो जाएगी कौन सी डेवलपमेंट हो जाएगी? प्लीज कंक्लूड। उसके बाद अब एमएलए बना लो दोबारा, पहले 25 मिलते थे अब 30 मिल जाएंगे और क्या होगा?
डेवलपमेंट का रास्ता नहीं निकल सकता है यहाँ से। डेवलपमेंट के रास्ते का रोड हेड इज दी वेरी मच क्लियर इज रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम पीसफुली एंड विद इंटरडिपेंडेंस नोशन ऑफ द नेशन। धन्यवाद। Thank you. Welcome to Manishankar Iyer. Has joined us. May I now request Mr. Vatali, former police commissioner, Thank to you very offer his comments. Vatali sir. Thank you, Shah Sahab. Sorry to He join is late. also an author. How is it that you are late today? I've been somewhere else. Sir, All right. I don't want Please. to go into the DDC elections much. Now the DDC elections have sent a message loud and clear what the people want. I need not go into that. I need not go into numbers. But I am sorry that the Indian media is not putting up facts before the public, Indian people, what is happening in Kashmir. My point is that, as Mr. Khajuria has said, now is the time when they should restore autonomy to Kashmir, statehood to Kashmir as it existed on 5th of August 2019. Now everything has been made clear to them. 3 seats they have taken in Kashmir, and they are having some role vagara in Jammu, because 3 seats, number 1 seat was without any opposition because the form was rejected of the opposition candidate for certain technical reasons. Another seat of Tilel, which is a militarized area, that has been won there. Even in certain areas of Kashmir, I am so sorry to say, because in our times, army has never been used for such things. Nowadays, even in South Kashmir, army attempted to intimidate people. But they have refused to listen to them, and they have voted for the candidate whom they wanted. So these are the things. Now they should understand these are the messages. And so far as the first and the foremost question of Kashmiri Pandits, which just now was mentioned by Mr. Khajuria, why they are not moving in that direction of returning them to their motherland? There are poor people here. There are not many people who have got their houses in Jammu. Like many people who have constructed their houses, who have constructed their palatial houses, they may not want to go. But the people who are poor, who have got land in Kashmir, who have got agricultural land in Kashmir, mostly villagers, nothing has been done, because Kashmiri Pandit is being used as an instrument. He is being used as an instrument. They don't want to send him there because they want to keep him here. That is all what I have to say. Thank you. Correct. Thank you very much. Professor Muju, please offer your comments. Gopi Kishan ji. Thank you, sir, very much. Shah Sahab, I am very clear about the whole issue because there are 2 dimensions. One is the external dimension, that is the issue with Pakistan. Other is the internal dimension. What we are doing is DDC or other things is all internal. We are decorating from the inside, but the basic issue remains there. We may do anything like DDC, whatever method we may use, but this is not going to solve the basic problem. Then we have to think of the road, talk about the road. Which road? Vis-a-vis Pakistan or vis-a-vis internal politics? If you are talking vis-a-vis internal politics, have any sort of method to use it and satisfy people. It may be democratic, it may be military, it was something. But the basic issues, unless you solve the problem with Pakistan, you cannot have peace or develop and progress in Kashmir. We are all artificial, nothing concrete, nothing permanent there. And we have been taking always steps which are alienating, right from 53. All their alienation has increased, always increased. This our steps have only created alienation, and we have distanced ourselves from the thing. You need people with heart, not physical bodies, but with heart. Are they with us? And what to get them back? And peace will be there only when people are given opportunity to develop. Education is there, healthcare is there, their needs are met properly in a scientific manner.
and all the communities together. Civil society has to play a very important role in this thing. That's for the internal part of it. But basic, as I again repeat, is the Kashmir issue which we must solve. And unless that is solved, these issues will come on. We will say road here, say road that way or that way. You will never have peace or you will never have progress in this state. Thank you very much. Thank you. Ruchi Chauhan, are you there, Ruchi ji? Sir, I'm here. Yeah, please offer your comments. Hello. And Yeah. Active is from Jammu. Yeah. Sir, first of all, I would like to thank you for inviting me on this prestigious forum platform. Since very senior people have spoken, I'm a very small person before them. And I second Khuda Sahab, Taregami Sahab and Bhatt Sahab, even the journalist Hussain Sahab, I'm forgetting the name. There is a little hope, I feel, with the present scenario because of this DDC elections and the results. And the problem has also been highlighted, and you know, there is a hope of peace also, because very few areas, you know, has shown the resentment. And every citizen of our J&K has exercised the power of by casting the valuable vote and by choosing the candidate of their choice. The problem, I feel, is not at the grassroots level. The problem is with the policy makers, the head of the political parties. And we have seen many a times that whenever there is a governor rule, our people are happy because वो सब कुछ streamline हो जाता है, सबके काम होते जाते हैं, ज़्यादा chaos नहीं होता. एंड मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं कभी मतलब अक्सर इन्होंने चीटेड फील किया है, बिकॉज जब भी हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, चाहे वो कोई भी हो, तो पिक एंड चूज होता है, एम्प्लॉयमेंट में भी अपने लोगों को मौका दिया जाता है, और यू नो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में भी अपने लोगों को अच्छी पोस्ट दी जाती हैं. बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज से लोग खुश नहीं रहते हैं. एंड आई थिंक कि हमारी बीजेपी का भी जो प्रेजेंट सेटअप है जम्मू कश्मीर का, आई एम नॉट कोटिंग द सेंट्रल, इतने लोग खुश नहीं है. इवन द ग्रॉस, क्योंकि ग्रॉस रूट लेवल का जो आदमी है वो तो काम करता जाता है, वो लोगों से कनेक्टेड रहता है, तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स का पता रहता है. प्रॉब्लम है जो फीडबैक नहीं जाता ऊपर, चाहे सेंटर में कोई भी वो हो. मतलब क्यों ये अनरेस्ट का वजह ही यही है कि प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं किया जाता. जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है वो अपने उनके पॉलिसीज डिफरेंट रहती हैं, और लोगों की सोच, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, की जरूरतें क्या है वो मतलब उसका ख्याल नहीं किया जाता. अभी तक देखिए कि 370 एब्रोगेशन के बाद हमें ये होप दिलाई जा रही थी कि एम्प्लॉयमेंट होगी, बहुत सी चेंजेस आएंगी, इंडस्ट्रीज आएगी. अभी तक कोई भी स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का यू नो एफर्ट्स नहीं किए गए हैं. और मुझे लगता है द रोड विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू we should be given you know employment, and हमारी जो इंडस्ट्रीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए ताकि वो J&K में आए. अभी तक कोई हलचल नहीं नजर आ रही है. कोई इंडस्ट्री आएगी, कॉल सेंटर्स आएंगे, बड़े MNCs आएंगी तो हमारे बच्चों को काम मिलेगा. और जब तक यूथ इंटीग्रेट नहीं होगा, यूथ की एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो हम लोगों में ये अनरेस्ट रहने ही वाला है. तो मुझे लगता है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज देख लीजिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वाइड नहीं है. और जो सबसे बड़ी बात है, जो इंडस्ट्री हमारी फ्लोरिश कर सकती है, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग, राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू यू नो हॉर्टिकल्चर टू हैंडीक्राफ्ट, लाइक खुदा साहब हैज सेड, हमारे पास सब चीजें मौजूद है. मगर हमारी जो कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग इतनी ज्यादा चली जाती है कि बाकी करते हैं. तो हमने एक अपने वेबिनार में हमने हिसाब से किया था कि जो अमृतसर कोलकाता हाईवे बन रहा है, Sorry, we can't hear you. Thank you,
रुचि जी. May I request Suja Jafar Saab. Jafar Saab. वालेकुम सलाम. हाँ, please speak. Offer your comments. Suja Female Jafar है? Saab. Female है? Yeah. Suja Jafar Saab. हाँ करिए. हाँ बोलिए. I missed the IT पे करने की मैं लगा. Thank you, sir. करो. जफर साहब आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. Dr. Ashraf, can you? Yes, sir. Can you hear me, sir? Yeah, now speak. Oh, thank you very much for the times. opportunity. Yeah, thank you very much for the opportunity to speak on the topic. J&K, the road ahead. Let me come straight to the point. The only road ahead for J&K is free and fair political process with an aim Free to and give fair opportunity. political process. Yeah. As always, I have been saying, with an aim to give opportunity to all shades of opinion and political contingencies to make the process a robust one. The recently held Panchayat elections is a wonderful idea. Nobody denies that. But all ideas are only ideas. Just like a bad idea, if executed properly, can turn out to be a useful one, a good idea also has a risk to culminate into a better outcome. The elections did record a good voter turnout, but it could have been even better. The administration displayed an attitude of uncalled for caution for reasons best known to them, although it seemed that the perceived fear of cocking up the whole exercise may have played heavily on its mind, on the administration's mind, I mean say. Or maybe, as the inputs from the ground suggest, that it was in no mood to leave a space for the non-BJP representation. So that was probably the relative haste in announcing the DDC election dates, as Mr. Tarigami also was complaining about. Now, I will not argue for or against this perception at this moment. What I shall argue, however, is that the quality of the results is not impressive. It could have been better. If we analyze the whole process and the results it delivered here in the valley, it's hard to miss that the people, by and large, voted not for the political parties, but for the individual candidates, irrespective of the fact whether they carried a party tag or with them or not by itself. Now, it has been also mentioned that 50 independent wins. Now, this speaks a lot. BJP had a clear win in the Hindu-dominated regions of Jammu, but the same binary did not translate into NC's win in the valley. Now, NC got an edge not because of its agenda, but because other strong candidates did not file the papers for whatever the reasons. People were uncertain till the day the elections formally began. Now, there was not much of a canvassing also, as should have been, partly because of the weather and partly because of other reasons. The fear element is there, as we know, and that's an open secret. Now, the road ahead to me lies in political process. One, but it has to start from the political process, a proper one that will allow a vibrant participation of the citizens from all walks of life to join groups or parties of their own choice. The opposing political viewpoints should be given a respectable space. And what's needed here in Jammu and Kashmir is basically a good governance. And for good governance, a robust opposition is not a bad thing. The onus of responsibility lies on the shoulders of the ruling dispensation. However, citizens also have to do their bit. After all, they have to be argumentative enough to take the process forward. The educated class has to come forward. There's no choice left with them. The sooner, the better. I think that is it. Thank you very much. Thank you very much. Is Sir, Suja Zafar Saab?
जी 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 available now? Yeah, please. हाँ offer your सर, मेरी comments. आवाज आ रही है? मेरी आवाज Before आ I रही है invite आपको? Manishankar Iyer to offer his comments, Suja Jafar साहब, please. मेरी आवाज आ रही है शाह साहब? हाँ जी, आ रही है, आप बोले। शाह साहब, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा आदाब। मुझे एक बात आपसे कहनी, मैं बहुत मखसूस सी बात करूंगा मैं। ये हमारे खजूरिया साहब ने जो बात कही, बहुत रीजनेबल और बहुत ही प्रॉपरली गाइड किया उन्होंने आपके। ये रोड जो है ये अहेड नहीं, ये रोड ब्लॉक है। ये जो रोड है ये हमारी ब्लॉक है। सब कहते हैं जी, कोई कह रहा है कि एजुकेटेड क्लास को सामने आना चाहिए, कोई कह रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। ये सब दिखावा है। अर्जुमन हुसैन साहब ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि ये प्रॉब्लम कहाँ है। रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक भैया थोड़ा टाइम लगेगा, इस मीटिंग चलाएंगे। नो इन्वेस्टर विल, प्लीज सर, प्लीज टेलीफोन कर दीजिए। टेलीफोन बंद कीजिए अपना। तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती जाएगी। स्टैग्नेशन है। स्टैग्नेशन को एड्रेस करने के लिए आपको गन को बाहर निकालना पड़ेगा, पीस प्रोसेस को आगे करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस गन कश्मीर के अंदर है तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। नोबॉडी विल इन्वेस्ट ए रूपी देयर। ये मेरा मानना है और ये मेरा कहना भी, मैंने पहले भी आपसे कहा था, जितनी देर तक डिसिप्लिन और लोगों को अपना नहीं समझेंगे, ये मार दाड़ की खून रेजी बंद नहीं होगी, उतनी देर तक इस मसले का हल नहीं है। सेकेंडली, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। बात करने के बाद अगर ये हमारा हिस्सा है तो फिर लोगों को हमें समझाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन की जो गाड़ियां यहाँ घूम रही हैं इनको बंद करना पड़ेगा। देखिएगा, रेजोल्यूशन किसी चीज का आप रेजोल्यूट करके ही आगे डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो हम ख्वाब देख रहे हैं, एक बहुत सुनहरा ख्वाब देख रहे हैं कि मुर्गी अंडा देगी, उससे चूजा निकलेगा, मार्केट में जाएंगे, बेचेंगे और हमारे इकोनॉमिकली हम ऊपर हो जाएंगे। सर खजूरिया साहब से आप मैं मुतफिक हूं उनकी बात से, और ये ख्वाब मत सोचिए। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से कहता हूँ ये ख्वाब मत सोचिए। अनटिल अनलेस गन कश्मीर से नहीं निकलेगा कुछ नहीं होगा। ये भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। आज आपका 4G ले लिया गया, 2G पर आप पहुंच गए। क्या कर रहा है बच्चा हमारा? खराब हो गया, आपका स्कूल बंद हो गया। अनटिल अनलेस ये इशू नहीं सॉल्व होगा, कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होगा, कोई वहां पर पीस नहीं आएगा। आप मिलिट्री के जोर पे वहां काम कर रहे हैं और आपको ये एडमिट करना पड़ेगा, मिलिटराइजेशन की वजह से ये सारा चल रहा है प्रोसेस। अगर यहाँ पर अगर ये पीस, वहां पर पीस लानी है तो वाकई में पीस लानी है, मारदार को बंद करना है। मेरा ये कहना है और मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि पहले पीस के लिए आप बात कीजिए। डेवलपमेंट तब तक नहीं आएगी जब तक गन नहीं जाएगी। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। भगवान आपकी उम्र दराज करे और आपके होते होते ये कश्मीर इशू सॉल्व हो जाए। थैंक यू वेरी मच माय डियर सर। Thank you very much. May I now request, before I request Manishankar Iyer to offer his comment, Sajad Noorabadi, a young activist from Srinagar. Sajad, for couple of minutes. Sajad Noorabadi साहब, आप बोलें। क्यों शाह साहब, मेरी आवाज आ रही है शाह साहब? हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलें। थैंक यू उर्दू शाह में बोलिए। साहब। देखिए, जो हम रोड अहेड की बात करेंगे, अभी हाल ही में जो यहाँ पे जो इलेक्शन डीडीसी के हुए हैं, तो ये बहुत एक खुशाइंद कदम है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही कहेंगे, 3 टायर जो पंचायत सिस्टम है, अगर सरकार इसको मजबूत करना चाहती है तो हम इसको वेलकम करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। और सरकार को चाहिए कि इसी तरह वो जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे असेंबली इलेक्शन भी कराएं ताकि यहाँ पे लोगों की हुकूमत बने। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों की हुकूमत बने, फिर सरकार, लोग, आम लोग किसको ज्यादा मैंडेट देंगे, फिर कौन सी सरकार बनेंगे, वो कौन सा डिसीजन लेंगे, वो तो फिर बाद में हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे, सरकार ने जितने भी डिसीजन लिए हैं, चाहे हम जो 5 अगस्त की बात करेंगे या उसके बाद जितने भी डिसीजन लिए गए हैं, हम चाहते हैं कि जितने जो भी ये डिसीजन लिए हैं उस टाइम भी असेंबली सजाद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
शाह साहब मैं इजाजत चाहूंगा, मैं थोड़ा सा एक और मीटिंग में जा रहा हूँ, प्लीज सर। सुनिए, बस आप मणिशंकर अय्यर साहब को मैं दे रहा हूँ। मिस्टर मणिशंकर अय्यर, प्लीज ऑफर योर कमेंट्स। अय्यर साहब नमस्कार। जफर Manishankar Iyer, please. Thank you very much. Is my voice here being heard? Yes, it's. Can you hear me? Yes, please. Can you hear me? Yes. Hello. Okay. Well, I first must apologize to everyone who's at this meeting that owing to an electricity problem in my house, which has only just been resolved, I have only been able to listen to the last 15 or 20 minutes of this discussion, which means that perhaps a majority of the interventions I have not heard. It's my loss, and I deeply regret that this entire discussion, which I was so looking forward to, has escaped me for reasons that are obviously beyond my control. I've come into this discussion at the point where there was an issue about whether development will lead to peace or whether it is peace that will lead to development. And begging Ruchi Chauhan's permission, I would say that you have to have peace and harmony before you get to genuine development. And the DDC is an instrument for development. It's not an instrument for peace. It is not an instrument for the political process. In fact, I don't know where they've got the DDC from, because it is not in the J&K Panchayat Act. And as far as I know that the All India Panchayat Act has not been accepted by the J&K Assembly and has therefore never been implemented there. In these circumstances, it is obviously an extra constitutional device that has been resorted to. And I see no reason why they should go towards an extra constitutional device when there are many constitutionally valid other devices to restore the political process. So I would say the center's objective in holding these elections was not, repeat, not to restart a political process, but to somehow divert attention from the absence of a political process. And I think Dr. Ashraf was right, and so were many others, that until we have a political process restored, I don't think we can talk of democracy. Yes, there may be minor development efforts that are not impeded by politics, but if you've decided that democracy is the system within which development should take place, then I think it is counterproductive to ask for development without having democracy. And I see no reason why democracy should have been disrupted in the erstwhile state of Jammu and Kashmir for so long. And as has been pointed out, an army-imposed discipline on the people. It is not an attempt to evoke a genuine cooperation. It's not an attempt to secure the volition of the people of Jammu and Kashmir, and is therefore bound to have very, very mixed results. Certainly, some BJP people candidates have succeeded in winning, but that is because
the political process was opened for them in an unimpeded manner. But for the candidates of the People's Alliance for the Gupkar Declaration, they were not given the freedom to canvass. And the excuse that was made is that it is for your own security that we are not doing this. And yet, when it came to BJP candidates, they were provided the necessary security to be able to canvass. In any case, the results do show that there is a considerable degree of dissatisfaction with what has been happening since the 5th of August, 2019. It's not only the reading down of Article 370 and Article 35A, it is also a completely human lockdown, not a natural COVID lockdown, that has been imposed in the valley and in many parts of Jammu for all this last 18 months or so. And it is without raising that lockdown, which has been created by human agency, that is, if you can call such inhuman people as Rana Center a human policy, they are imposing what they think is a political process on the people of Jammu and Kashmir. And I think it's very brave of the patriotic parties in the valley to have participated in this election, which was clearly tilted against them. All the members of the Gupkar Alliance have been targeted during the course of the election. So given that, it is amazing how well they have done. Certainly in the valley, there has been a virtually total rejection of the BJP and therefore of everything that it has done since the 5th of August last year. And while in the valley, not unexpectedly, we have a mixed result with a little majority for the BJP. The fact is that the Gupkar Alliance has done extremely well in Jammu, given the kind of propaganda that has been unleashed by the BJP and the fact that there is a very mixed population in Jammu. And while there may be, where there are elements of the Jammu population who are going along with this idea of reading down articles of the Constitution without consulting the people of the state, of the erstwhile state. And then to hold this election without restoring the statehood of Jammu Kashmir shows that the government of India has very little idea of the reality in the state. The political reality is that what they have done is completely unacceptable in the valley, and it's completely unacceptable to important segments of Jammu, unless your objective is to create a Hindu-Muslim divide. Now, that is, of course, the objective of the government. And they have been doing this, and they have been provoking this. But there is something about the Kashmiri people, by which I include the people of Jammu. There is something about the traditions and culture of the old Riyasat, that there is something called Kashmiriyat, which was acknowledged by everybody, especially after Vajpayee said so. So unless the spirit of Kashmiriyat is brought in, and there is real Jamhuriyat in the erstwhile state, I'm afraid the talk of Sabke Saath, Sabka Saath, Sabka Vikas sounds very, very hollow. There is obviously, as somebody said, no Vikas possible
unless there is harmony in the state. And even though people may belong to different political parties, unless there is an underlying unity of purpose, of voluntary purpose, reintroduced into the erstwhile state, I'm afraid any results are only a partial reflection of the reality, and whatever is the outcome today is the best that could have been expected in the circumstances. Had there been real freedom, real democracy, really free and fair elections, do you really think that any BJP seat would have been improved? Certainly, the Gupkar Alliance would have returned a much better performance if they had been permitted to do all the things that are necessary in an election to win. And it is the absence of a political will in Delhi to allow the people of erstwhile Jammu and Kashmir to have all the rights bestowed upon the people of India that makes the people of the erstwhile Riyasat feel that they are being reduced to second or third class status among the citizens of India. Is there any fraternity being promoted? Is there any liberty being promoted? Is there any equality being promoted? And if not, then how can the government of India claim to be acting constitutionally in the state of Jammu and Kashmir? Now, my own reaction on the 5th of August last year was to write an article in the Indian Express in which I said that you're pushing Kashmir into becoming the Palestine of the Indian Union. I'm very glad that prediction has not come true, because all the mainstream As always, parties of Jammu Kashmir have declared themselves against violence. They've declared themselves in favor of democracy. They've declared themselves in favor of the constitutional process. And they've said, let us compete in that domain equally. Also, I want to take up Sri Khajuria's point that the situation in Jammu Kashmir, which is wedged between the rest of India, China, and Pakistan, is at one and the same time a domestic issue and an international issue. And it is a domestic issue that seems to be determining what will be the outcome. For we have seen the Modi government, ever since the Chinese arrived up in parts of Ladakh that they were not in earlier, making an effort to conduct a dialogue at various levels with the Chinese. The two militaries are talking, the diplomats of the two countries are talking, at the political level there is a dialogue, and repeatedly we are being told that disengagement is in the offing, that the military confrontation is being reduced. But why not with Pakistan then? And you really think that with Pakistan, in its eyes, legitimately interfering in the internal affairs of India that includes Jammu and Kashmir, you will be able to settle anything without talking to them. So in these circumstances, I'm afraid the road ahead is only, as somebody said, a roadblock. There is no road ahead if we do not restore constitutional democracy to all the people of Jammu and Kashmir, irrespective of their religious faith. And unless you have strict secularism informing your policies
as far as J&K are concerned, given that it is the only majority Muslim state in India, there is no way forward. We have to go back to the spirit that animated Nehru and Sheikh Abdullah in the face of considerable opposition in both Jammu Kashmir as well as in the rest of India to seeking the accession of the Riyasat to India. That's why they made that realistic agreement. Now, that was the basis on which the center had a relationship with the erstwhile state. And it is that trust which has been broken unilaterally by the BJP government to fulfill its manifesto. Did it write its manifesto in consultation with the people of Jammu Kashmir? No. It wrote it in consultation with the RSS and other elements of the Sangh Parivar. And What when is he talking about? it was clearly understood, and it certainly is a part of our constitution, because Parliament is a creation of that constitution, there has to be very, very detailed discussion about one party misusing its majority to rush through legislation which fundamentally changes the character of India's relationship with a constituent unit. I am from Tamil Nadu, and therefore about as far away from Jammu Kashmir as possible. I know that in my state, until 1962, there was a lively demand for separation from India. At that time, did the government of India call them anti-national or call them terrorists? These words come so easily to the BJP. And because Nehru did not use that kind of language, Tamil Nadu is now, of its own volition, an integral part of India. Until we get all the people of Jammu and Kashmir, and not just a segment of the Jammu population, voluntarily wishing to be part and parcel of our country, as we succeeded with the Punjabis at the time of the Khalistan movement, as we have succeeded in the Northeast with at a time when there have been a great deal of violence there. You cannot covet the territory of the old Riyasat and not covet the people of that Riyasat, today's people of that Riyasat. Please conclude. So much alienation in Jammu Kashmir from our ruling dispensation that there is no road ahead until either the ruling dispensation in Delhi is defeated in an election or they undergo a lobotomy and change their opinion. In the meanwhile, Ashwini Kumarji is welcome to laugh. I think I'm shedding tears at a time when he is trying to satisfy himself by laughing. I think that those colors, the saffron and the green, are the biggest anti-national force in our country. Last laugh. Thank you very much. Thank you very much. Anybody else who would like to offer comment? Kuldeep Khoda Sahab, would you I am like to say highly something? thankful to Mr. Iyer for giving me the reason to laugh. Thank you Just very much, Iyer ji. Khoda Sahab, is there anyone who would like to offer additional comment? Professor Bhatt? Professor Bhatt? प्रोफेसर भट्ट, अश्विनी जी आप बोले। यस, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इतना अच्छा एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। सबसे बड़ी बात जो इस सारे
जो हमने यहाँ पर बातचीत की है, इसमें ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट थिंकिंग सामने आई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चमन इंडिया को उजाड़ के लिए सिर्फ एक माली चाहिए जो उसको उजाड़ सकता है, और डिस्कशन बहुत बड़ा हो तो उसको बंद करने के लिए एक अय्यर साहब चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस है उन्हें कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कश्मीर कोई चेंज लानी है, कोई अच्छी चीज लानी है, तो उसलिए अब हमें पहले केंद्र सरकार को बोलना होगा। इमेजिन करिए उनकी थिंकिंग क्या। हम यहाँ पर पीस के रास्ते पर जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट के रास्ते पर जाना चाहते हैं, and he want people of Jammu and Kashmir state to confront government of India and change, because changing government of India at the center will bring some kind of change in Jammu and Kashmir state. I am very sorry that such a person of such a grit having such a loose notion and idea about Jammu and Kashmir state. However, we were bound to listen to him. I wish him well. He is in an advanced stage of his life. I wish him well at his 120 years, and I pray to God that he should be through this corona period also. But take it from me, times have changed. BJP will be there at least for 35 years more. We will have to wait for 35 years to change it. And in the meantime, kindly हम जम्मू कश्मीर के लोगों अय्यर साहब माफ करिए, हमें अब जिंदगी के दिन अच्छी तरह से गुजार दीजिए, हमें झगड़ों न डालिए, हमें फायद में न डालिए, हमें हिंदू मुस्लिम के जो आप झगड़ों तोहफा ना चाह हमें न दीजिए। हमने खून जी देखी है, हमने बहुत लूट मार देखा है। मैं स्वयं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से हूँ और मैं एक विस्तृत जीवन 30 साल से जी रहा हूं। हमें माफ करिए, आप अपने तमिलनाडु में रहिए और मुझे जम्मू कश्मीर के लिए आपकी कोई सजेशन नहीं दिए। जम्मू कश्मीर जो लोग हैं, दे आर कॉम्पिटेंट टू थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज गुड फॉर देम एंड वी आर ऑन दैट पाथ। मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर लोग अपना रास्ता चुन लेंगे और अच्छी तरह से चुनेंगे और हम शांति की व्यवस्था पर चल रहे हैं। और मेरा यकीन है मेरे बंधु जो हैं, मेरे छोटे बड़े, we will make Jammu and Kashmir a new horizon। और मेरा ये माह है 2021 में हमको न्याय दे कि आप जम्मू कश्मीर आए और यहाँ पुष्प पर्यटन को आंखों से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Ashwini ji. Vatalisa wants to say something. Vatalisa. 1 minute। अश्विनी जी को कह रहा हूँ कि जब तक ये वहां से चले आए श्रीनगर से यहाँ जम्मू, तब तक ये सारे कांग्रेस में थे। They were all Kashmiri Pandits except my friend Tikkalal Teplu. Nobody was in BJP. मैं Majority of उन्हीं का शागिर्द हूं, मैं tikkalal teplu का शागिर्द हूं, मैं उसका दोस्त हूँ। Anybody मैं else? उनका शागिर्द हूं। Anybody else wants to say anything? Gopi Kishan ji. I'm sorry, मेरा सारा सुना, मुझे जरा हॉस्पिटल का फोन आ गया था, तो इसलिए I could hear all people। लेकिन ये बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है क्योंकि एक्ट मीन्स यहाँ पर हमारे एलिगेशन यहाँ आप कम्युनल और रीजनल डिवाइड भी हो गया है। Even if it's so obvious, but it is obvious। इलेक्शन दिखा रहे हैं, बातचीत करने का ढंग जो तरीका है वो रीजनल और कम्युनल डिवाइड हो रहा है, पॉलिटिकल डिवाइड तो है ही। अब किस रास्ते पर हम जा रहे हैं? और मैंने इसके बारे में एक ऐसा कश्मीर के बारे में एक लेख लिखा था ऐसे कि इट वाज अ सॉर्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। जब कश्मीर एक्सीड होगा इंडिया के साथ, इट वाज सॉर्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। नाउ इट्स अ फोर्स्ड मैरिज आफ्टर अब्रोगेशन। इट्स नॉट दैट। तो जस्ट
एवरीबडी हैज हिज ओन व्यूज एक्चुअली। अब तो कोई ये नहीं कह सकता मेरी व्यू करेक्ट है, मेरी व्यू रॉन्ग है या क्या कुछ है। जो टोटल टीम है, जो देश के लिए, स्टेट के लिए ठीक रहेगा, वही करना पड़ेगा। एंड नेचुरली एवरीबडी हैज टू अकोमोडेट ईच अदर्स व्यूज एंड पॉइंट्स। थैंक यू। हमारा करेक्ट है, बात सब गलत ही है, वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू। एनीबडी एल्स? प्रोफेसर बोल भट्ट, रहे हैं सर। हाँ बोलिए। सर ये बहस जो हुई है ना, ये एक सेंसिटिव इशू है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज भी एंड गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम दे आर नॉट टेकन इट सीरियसली एज एवर। पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, अगर उसको निकालना चाहेंगे तो जितने 12 लोग हैं ना, 12 दिशाओं में जाएंगे। जो कुछ हो चुका है वो हकीकत है, हमें उसमें से ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ये बात है, जब तक हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को नहीं सुनेंगे, वो तो कंट्रास्टिंग पोल्स अपार्ट, वो तो सुनना पड़ेगा अगर आपको सोल्यूशन चाहिए यहाँ के लोगों की भलाई के लिए। टॉलरेंस होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में बोलने का हक है, सुनना चाहिए, एब्जॉर्व करना चाहिए। लेकिन हकीकत कुछ और है, इस पे तो अलग से एक बहस करने की ज़रूरत है। इस इलेक्शन ने बहुत कुछ दिखाया है, अब सबटली दिखाया है, उसका हमें रियलाइज करना चाहिए। मुझे हिसाब से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। ये सरफेस पे जो दिख रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज शो कर रही हैं, अंदर की सिचुएशन उनको भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी जो वो शो कर रही है अंदर की सिचुएशन उनको भी मालूम है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हैं तो इस जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, उनको हम बिफोर नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने ग्लैडली इलेक्शंस में हिस्सा लिया, उनकी कहीं जीत हुई कहीं हार हुई। इसी तरह जनता पार्टी ने गवर्नमेंट की तरफ से, वो हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने भी हिस्सा लिया इसमें। उनको भी 100% सीट्स नहीं मिली, अगरचे उनको भी वोट बैंक बढ़ गया, लेकिन एक बहुत बड़ा फोर्स इंडिपेंडेंस की सूरत में 17 सीटें जम्मू से इंडिपेंडेंस ने ले ली, कश्मीर से 33। एक बहुत बड़ा फोर्स है, उसको आप देखिए, उनके सेंटिमेंट्स को देखिए, सबटली देख बहुत कुछ कह रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। मेरी रिक्वेस्ट यही है, इस तरह के फोरम में जब बात करेंगे टॉलरेंस होनी चाहिए। शंकर जी को, आयर साहब को भी अपना राइट है बात करने का, इसी तरह चंगरू साहब को भी अपनी बात रखने का है, टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर हम इसी तरह करते रहेंगे, हमने पिछली बार भी कहा था, अगले 70 साल लड़ते रहिए, कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बी पेशेंट और हमें काम करना चाहिए लोगों के, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हित के लिए। यहाँ के खास करके नौजवान जो बेकार हैं और जो में हैं, उनका फ्यूचर हमें सेव करना चाहिए, वो सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के भी और पॉलिटिकल पार्टीज के भी। थैंक यू। थैंक यू। Anybody else? Can I presume that whoever wanted to offer comment? Dr. Ashraf? No, not much, but actually I just wanted to just Please. say what Professor Bhatt has already, talked about. Professor Bhatt has already mentioned that about Shrangu Saab. Shrangu Saab is a well-educated and well-educated person, a good politician, seasoned politician, and a good writer. I take delight in reading his articles, which come in Rising Kashmir. But I'm surprised the reaction he showed at this time when IRG was speaking about the change of the government in Delhi. Now, elections are elections, right? Elections can have any type of a sort of an outcome, right? So even by himself, he said that after 30 years, BJP government, there is a chance for this BJP government to change. So change can be there, maybe 30 years or 40 years later. But I don't think that in this type of a form, we should be just behaving in such a manner. We have to be a little bit more, accommodative of others' opinions. Thank you very much. No, Ashraf साहब, हमने सबकी आवाजें सुनी,
अय्यर साहब हमें ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले केंद्र सरकार को चेक करें, उसके बाद यहाँ पीस आएगी. Have we to wait for that? No, he didn't mean that. Thank you. He didn't mean, Anyway, He said that. he didn't that's mean all that. right. He didn't mean that. Uh, I heard him. I heard him. ये तो I heard शुक्र him. करिए, उन्होंने ये कहा कि हमने Sir, he didn't पाकिस्तान mean. की मदद लेनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने पहले कहा था कि No, no, that is सरकार को केंद्र that सरकार is को a. मदद के लिए में You are a writer. पाकिस्तान की मदद लेनी चाहिए. उन्होंने Dr. तो Shira, पाकिस्तान में जाकर के ये Dr. बात कही Ashraf, थी. Dr. Ashraf. Chingu Saab, you are a writer. You are a writer. I don't expect from you to derive a meaning or put उनके words ये into the others' सारी mouth. चीजें मैंने की हुई हैं. See, मैंने Shah Saab- उनकी ये Shah Saab, सारी I just चीजें wanted अपने to make a आर्टिकल्स में small लिखी हैं. comment. Mr. I Arjaman go through Hussain. your articles. I know. Yeah, I just wanted to make one comment, additional comment. You know, Please, please. the Be points free. made here. so हमें very माफ करें, eloquently. जम्मू कश्मीर के लोग, ये लोग माफ करें, ये तमिलनाडु से आकर के, ये बंगाल से आकर के, उधर गुजरात से आकर के, हमें माफ करें. हम अपने आप को संभाल लेंगे और अच्छी Mr. तरह से Hu- संभालेंगे. Shah Saab, Mr. Hussain, please. Yeah, I just wanted to add some final thoughts. You know, Please. I think the discussion was so well and eloquently summarized by Manishankar Iyer ji. But there is one additional issue, you know, which quite often in this discussion since August 5 has got somewhat, you know, overlooked, and that is the livelihoods of the people of Jammu and Kashmir. And it's going to have very serious ramifications in the coming days. There are 4 aspects to that. One, that the current dispensation has changed the nature and the procedure of awarding contracts for local mining. As a consequence, thousands and lakhs of families are now jobless in local mining activity, whether it be mining of, you know, construction materials, sand, stones, boulders. And then there is the other issue, that is the dispossession of people from their current properties, whether the leased land held hotel properties or whether there are other properties being held by industrialists in industrial estates. They have already been served notices and asked to vacate. You know, in the next 1 year, we are going to have a huge crisis in Jammu and Kashmir with a huge number of population with no sources of livelihood. The question is that how are we going to deal with this situation? You know, that would be a time when, you know, this mainstream and this core politics would go to the back burner, because people will be ultimately jobless and there would be nothing to provide them livelihood and job. So I think it's very important to keep in mind that kind of a dispossession, besides the political dispossession that's happening in Jammu and Kashmir, economic dispossession is happening. And we need to really worry about that and think about that as well. Thank you very much. Friends, it has been a very interesting, thought-provoking and lively afternoon. Very interesting discussion. I don't need to summarize the discussion because you have heard everything. And Professor G.M. Bhatt, in a way, summed up the important points while making a second brief intervention. I would like to thank you once again for your participation, and hopefully we meet soon in the new year. May I wish you all a very happy and prosperous new year. Thank you very much once again. Thank you very much. So kind of you all. Thank you very much. Thank you, Shahzab. Ashwani ji, thank you very much. Thank you. So kind of you. Thank you, Shah Saab.